Hello everyone, wonderful day to wonderful all. So welcome back. So before I start this video, do share this video with your friends, subscribe this channel. थोड़ी सी motivation मिल जाती है यार. So do it. So do share it with your friends. So today we are going to start without wasting any time. Chapter number 4 of your mathematics, that is complex numbers and quadratic equation. So सबसे पहले हम बात करते हैं what are complex number. Complex number होता क्या? सो कॉम्प्लेक्स नंबर अब तक हम जो पढ़ते आए थे कि जो रूट वाले जो नेगेटिव नंबर्स आपके होते हैं, लाइक इफ आई राइट रूट -5, सो दैट विल एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट. बट नाउ वी विल सी दैट जो रूट -1 है, रूट -1 को एक इमेजिनरी जो नेम है वो दे दिया गया है, दैट इज आयोटा. दीज आर द इमेजिनरी नंबर्स. सो रूट-1 इज आयोटा. अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं आई का स्क्वायर करूं यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, सो आयोटा का स्क्वायर विल बी रूट-2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी -1. सो नाउ यस, नाउ आई कैन डू द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. नेगेटिव नंबर का भी हम लोग रूट निकाल सकते हैं, सो दैट्स एक्चुअली पॉसिबल. सो दैट इज आयोटा. अब देखो, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो सिंपल सा है. जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं हम a+i की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिखूं 5+3 और i3, सो दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो ये आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज योर रियल पार्ट. दैट इज योर रियल पार्ट. This is the real part I'll write. And the other part I'll write, that is the imaginary part. That is the imaginary part. और इन दोनों को मिलाते हैं जब हम, इन दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, जो नंबर बनता है आपका, that is complex number. This is complex number. रियल नंबर्स हमने पढ़े थे, रियल नंबर्स जो हैं सारे रियल नंबर्स. और रियल नंबर्स के अंदर जो हमारे रूट वाले नंबर, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइक सम रियल नंबर्स आर देयर वेयर नेगेटिव ऑफ लाइक माइनस नंबर्स का जो हम रूट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर वो भी इसके अंदर पॉसिबल है. दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर. सो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम मिला दें, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो a+i की फॉर्म है. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3/2 + 5 4 - so these all the i1 number, that imaginary numbers, iota वाले number, that are कॉम्प्लेक्स नंबर. So, देखते हैं एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है, 5 iota -3/5 iota, एंड यू हैव टू राइट दैट इन a+i की फॉर्म. दैट इज सो सिंपल. सो यहाँ पर हम अगर करेंगे इसको सॉल्व, दिस इज 5 iota and this is -3/5 iota. So 5 will be cancelled out with 5 and your -3 as it is, and iota will be iota square, and you know the value of iota, that is -1. Iota square is -1, so √3 -1, so ये आपका आ गया 3. So I can write it as 3 + 0 iota, because मुझे a+i की फॉर्म में लिखना था. So that I have done. So ये हो गया सॉल्व. नेक्स्ट देखो, now you know that iota square is 1. अब इसको ध्यान में रखना, that your iota square is 1 -1, sorry, not 1. So if I just write it, so I can write it as I square a to the power 1. So यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया हमने, I to the power 18 again iota. अब iota square, अगर मैं इसको लिखूंगी iota square to the power 4, राइट. अगर थोड़ा सा और चलो ब्रेक कर देते हैं इसको, आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा. Now I'm gonna write it as iota square to the power 4, राइट, एंड iota. और यहाँ पर आ गया iota square to the power 9 iota. iota square की वैल्यू कितनी है, -1. -1 to the power 4 iota and -1 to the power 9 iota. Now see this. Now you have iota square -4, पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा iota, और यहाँ पर कितना आ गया, इट विल बी -1 iota, right. So iota minus iota, that will be 0. So यहाँ पर आ गया 0. So ये होगा 0 + 0 iota. इसको अगर आप लिखोगे a+i की फॉर्म. सो बहुत इजी था, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो गिवन देयर. सो इसको भी हम सेम करेंगे वैसे ही. सो दिस इज जस्ट लेट्स मल्टीप्लाई 3 7 21. सो आपका हो गया 21 यहाँ पर. नाउ इफ यू सी दिस, सो 3 7 21 iota.
Let's multiply this inside. So 7 in iota into 7, that is 7 iota. And iota in 7, so it will be 7 iota square, right? So this, if you solve it, so 21 as it is, iota and 7 iota, that will be 28 iota, 28 iota. And here it is 7, so not iota, it's iota, okay. So, right, it is I square की that is -1. So if अगर इसको solve करें, that is 21 minus 7 और यहाँ पर आ गया 28 iota, right? So if you solve that, that will be 14 plus 28 iota. That's just a plus iota b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया. So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको a plus iota b की फॉर्म में लिखना है, और ये बहुत इजी चैप्टर है आपका. Okay, I feel like this is the easiest chapter, right? So now 1 plus 3 iota. अब आपको देखो ये a plus b cube की फॉर्म में है. So a plus b cube is a cube plus b cube plus 3ab plus b. साथ में देखो अगर माइनस होता है यहाँ पे, so a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? That is a cube minus b cube minus 3ab a minus b, right? तो ये फॉर्मूला होता है माइनस माइनस माइनस. तो अब देखो ये था. सो हमारे पास को सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab and a plus b, right? So अब देखो, let's solve it further and let me just put it in the box so आपको ये कंफ्यूज ना करे. So ये फॉर्मूलाज है, मैंने अलग लिखे हैं, राइट? इससे आप कंफ्यूज मत हो ना. अब लेट्स सॉल्व इट. सो इसको सॉल्व करेंगे हम. 1/3, 3 3 9 9 27. सो 1/27 आ गया यहाँ पर. एंड सी दिस, इट इज 3 iota, दैट इज 27 iota आ गया यहाँ पर, iota क्यूब. So let's solve it. 3 से 3 cancel out हो गया, that is 3 iota again. So now if I solve it, so 1/3 and 3 iota. So if और further solve करते हैं, 1/27. So इसमें से देखो अगर हम I square को अलग लेते हैं तो 27 minus 1 iota, 3 iota. Let's multiply it inside. So 3 iota, 1/3 iota, so 3 iota into 1/3 iota. और यहाँ पे कितना आ गया? 3 iota, 3 iota, राइट? सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे. सो लास्ट स्टेप हम लोग लिख लेते हैं ब्लू पेन से. 27, 1/27 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखोगे 27 माइनस विल बी -27. एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा वन नोट शायद चेंज हो गया, मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. 27 iota, राइट? एंड 3 विल बी कैंसल आउट विद 3. सो यहाँ पर कितना आ गया आपका? plus iota. And if you see this, so 3 3s are 9, 9 iota square, 9 iota square बोले तो 9 iota square, that is -1. so यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे, 1/27 -9 और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो आपका -26 iota. इसको सॉल्व कर लो, just take LCM of it. So if you just simply take the LCM, so you're gonna get as 27. Just solve it. So 27 1 9, 27 multiply 9, just take it what it would be. 243 minus 26 iota. So your complete answer will be, just let me write it here only. So it is -240. Sorry, God bless me. That is 27 minus 26 iota, right? This is how we can actually do it. So यहाँ पर a plus iota b आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जितने हमारे आयोटा वाले नंबर्स है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सारे. सो उसके अंदर दो पार्ट्स है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. आपको सिर्फ करते टाइम ध्यान रखना है कि उसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन मोर थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. दो चीज आपको स्टडी करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और एक उसका कॉन्जुगेट. लेट्स स्टडी दिस ऑल्सो. अगर बात करते हैं इसकी कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, राइट? तो हमारा तो उसका कॉन्जुगेट होगा, दैट इज a माइनस आयोटा b की फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 3 plus 4 iota, so the conjugate will be
It will be 3 minus 4 iota. Right? So जो आपका imaginary part है उसका आपको sign change करना, nothing else. Now let's move on to the thing that is modulus. What modulus is? Modulus is when you just multiply this and this, it will actually become the modulus. So this is modulus. What it actually becomes? So your modulus of z, that is a square plus b square. And from here I can actually write, if I say my z is mod z by z conjugate. So अगर मैं इसका reverse कर दूं, so my z inverse will be z plus modulus of z. So अगर आपसे पूछा जाए कि write the inverse of this, so आपका inverse क्या होगा complex number का? This is the inverse, right? So this is how you can actually do it. So let's move on further. So why it's not moving down? Yes. Find the multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse. Multiplicative inverse मैंने आपको अभी बताया. What is multiplicative inverse? That is z by that modulus. Let me write conjugate by modulus z. So simple. That is your z is given. Your z is given this. So definitely your conjugate will be 4 minus 3 iota. 4 plus 3 iota, right? So let's find it. So if you want to find the inverse, that will be this by modulus of z. So this is 4 minus 4 plus 3 iota. So it is under root a square minus b square, that is under root 4 square plus 3 square. So if we solve it further, that is 4 plus 3 iota. So 4 square, that is 16. 16 plus 9, so that will be 25. 4 plus 3 iota, that will be root 25. Root 25 क्या होता है हमारा? 5. So that is 4 by 5 plus 3 by 5 iota. That's the answer, right? So how you can actually solve it. Now let's move on further. Let's move on further to another question. So again, you need to find out the inverse. So again, my z inverse is conjugate of z that upon modulus of z. So conjugate will be, that is root 5 minus. You just need to change the sign of the imaginary part only. Don't just change the sign of the another one. Okay, no need to change the sign of the complete. Just change the sign of the imaginary part only. Now the other one is, that is a square plus b square under root. So this is how you can actually do it. So that is root 5 minus 3 iota. If you just solve it, 5 root 5, that is actually 5 plus 3 3s are 9. So that will 5 plus 9, that is root 14. So root 5 root 14 minus 3 iota root 14. So this will be your answer. So this is the multiplicative inverse of your complex number. तो यही आपको तीन चीजें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर. एक मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट्स इट. और इसके अंदर आपको और कुछ नहीं करना है और बहुत इजी चैप्टर हो चुका है आपके लिए. इफ यू सी द फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यू नीड टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट. सो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए देखो, डायरेक्ट तो हम उसको कॉन्जुगेट नहीं फाइंड कर सकते. अब देखो z दे रखा है आपके पास. सो लेट्स फर्स्ट सॉल्व इट. सो इट इज गिवन दैट z is, let's solve it further. So 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो. Let's solve 3 2 जा कितना हो गया 6, and 3 को 3 iota से 3 3s are 9 iota. So minus 2 2, that is 4 minus 4 iota. So 2 3s are 6, that is plus minus minus 6 iota square, right? Iota square, let me not skip the step. Let us minus 3 iota square. So if I solve the below one, that is 1 into this, that's 2 minus iota. And now this multiply 2 to the 4, that is 4 iota minus 2 iota square, right? So this is what we can actually do. If I just solve it further, that is 6, 9 minus 4, that is 5 iota, right? Now minus 6, so 6, that's minus 1. Right? So if I solve it further, so that is 2 minus iota, that is 2 minus plus minus, no, sorry, minus plus minus, the sign will be addition, so 3 iota. So if it is 2, and let me put the sign of minus 1 also. So if I solve it, so that will turn out to be 6 minus 6 plus 5 iota.
minus plus minus multiply कर दिया इनको and it will be plus again. So 2 plus 3 iota plus 2. So if I solve it, that is 6. 6 and 6, that's 12, right? So that is 12 plus 5 iota. And here it is 4 plus 3 iota, right? So this is what you can actually get. Now, if I just write, okay, now you can see that to find the conjugate, I need the negative sign, right? So यहाँ पर दोनों के साइन तो ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते. So we'll do one thing, we will rationalize, right? So यहाँ पर ऐसे है, so हम क्या करेंगे, 4 plus 3 iota. So I will just multiply this number with 4 minus 3 iota and then 4 minus 3 iota. So if I just solve it, so क्या आने वाला है हमारे पास? So a plus b, a minus b, that will be a square minus, so it will be z. Let's first solve it. So 12 multiply this 4, so 12 4 the 48. So 48, 48, 12, 3 are 36. So that is 36 iota. 5 4 the, that is 20, 20 iota. That is plus minus minus. That is 5 3 the 15 iota square, right? So this is how we can actually do. So यहाँ पर देखो a plus b minus b. So अगर हम z और minus z, z और z conjugate को multiply करते हैं, that will actually be modulus z. So modulus z will be, so 4 square plus 3 square, right? So यहाँ पर let's solve it. So 48 minus 36 plus this, so it will be 16, right? So minus 16 iota. So if I just solve it, so minus and minus 15, that will be plus 15, right? So if you solve it, so yeah, 16, 16 plus 9, so that's 15, right? 25, sorry, 25. So that will be 48 minus 16 iota. 48 and this 15 also. So let's add it, 48 and 15. So that will turn out to be 5 and 4, that 5, that's 3. So 6, 6, right? 63. 63 minus 16 iota. So it will be 25 root 25. So that turn out to be 16 minus 60, sorry, 63 minus 16 iota. And this will be 5. So 63 by 5 minus 16 by 5 iota. So this is your z. So your z comes out to be this, right? So if your z comes out to be 63 by 5 minus 16 by 5 iota. So my z conjugate, so conjugate of z I need to find, that will be, just change the sign, that will be 16 by 5 iota. So this will what you need to find out. So this is what you need to find out. So I just got it, right? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू. सो इसमें काफी सारा पोर्शन है जो आपका कट चुका है, जिसके अंदर आपको पोलैरिटी फाइंड करनी है, राइट? और आपको जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है. सो आपके अंदर पास बहुत सारा पोर्शन जो है आपका कट चुका है. सो आपको ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारा पोर्शन आपको, जो मेजर पोर्शन था, दैट इज एक्चुअली नॉट हियर. सो आप सी, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं आपको करना. सो ये नहीं करना आपको. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. रूट्स फाइंड करने हैं, यू डोंट नीड टू डू इट. सो इतना ही पोर्शन आपको, सिर्फ 3 चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मॉडुलस क्या है, और उसका कॉन्जुगेट क्या है. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 40% हो चुका है. मतलब 60% जो मेजर पोर्शन था आपका, जो डिफिकल्ट लगता था बच्चों को, एक्चुअल में रिमूव कर दिया गया सिलेबस से. दैट्स ग्रेट, राइट? सो आपकी सीबीएसई हेल्प करती जा रही है, राइट? हम लोगों को तो इतना सारा पढ़ना पड़ा अपने टाइम पर. दैट्स ग्रेट. Alright, so hope you like this video. Share it with your friends. Till then, bye bye everyone. Take care. Do write in the comment section अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है. Till then, bye bye. Take care.